Rahim. I am Shrafat Afzal and today we discuss the topic on market. इससे पहले basically dear students we have read about what do you mean by economics and what are the main function of economics and what is the microeconomics. Basically we discuss the microeconomics and there are four portions of microeconomics. We have already discussed in Adam Smith definition: production of wealth, exchange of wealth, consumption of wealth, and distribution of wealth. So, in Adam Smith point of view, we have already discussed about the consumer theory, which we have discussed about what do you mean by demand and supply, and we have discussed about the consumer equilibrium and product and so on. The first of all, the consumption of wealth, and then we discuss about the production of wealth, the theory of second part of the Adam Smith definition, that production of the wealth, how we produce the goods and services, and third portion of the market is that is market. What do you mean by market? A market सर is a place. जी सर हमारे तो 9 चैप्टर या 10 चैप्टर तो हमारा तो नहीं है ये 10 चैप्टर की तरह है. सर ये आपने अपलोड किया हुआ है 10th ये वैसे लिखा हुआ है यार, ये स्लाइड में ये आपका 8 चैप्टर है वहां पे जो आप वहां पे पढ़ेंगे. अच्छा ओके. 8 से जी 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 So we discuss in this chapter we have discussed about the markets and what do you mean by markets. A market is a place in which the seller and buyer negotiate with one another for selling the goods and services, and buying the goods and services is called the market. Okay. A market is a place where the large number of consumers and large number of sellers are available is called the market. ठीक है. A market is a place in which the large number of buyers and large number of sellers. Basically, अगर हम market के बारे में discuss करें तो there are two types of the markets. अगर markets की type देखें ना generally OMA or KET markets, there are two types of the markets. One is the perfect competitive markets and the second one is imperfect. Okay, perfect and imperfect. So perfect competitive market is a market we have studied in detail. So perfect competitive market is a market in which we discuss the perfect competition, and imperfect markets is market like a monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. Students, imperfect market mean a monopoly. A monopoly mean a market in which only one seller and large number of buyers is called the monopoly. And the monopolistic competition, a market in which a few buyers and few sellers. Few buyers and few sellers. This is called the monopolistic competitive market. And the third degree is that the perfect competitive markets are markets in which large number of buyers and large number of sellers is called the perfect competitive market. So we conclude that in the monopolistic competition is a market which lies between the perfect competitive markets and monopoly. तो एक तरफ हमारी मोनोपोली एक्सट्रीम कंडीशन होती है और एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होती है. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो इन बिटवीन है, बिटवीन द मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन. अंडरस्टैंड नाउ? जी सर गो another slides. Introduction. And first of all we discuss about the economist. A competitive firm is a firm that does not determine its market price. This type of firm is free to sell as many units of its goods as it wish without affecting the market price. तो स्टूडेंट बेसिकली कॉम्पिटेटिव मार्केट जो है वो उस मार्केट को कहा जाता है कि जिसके साथ फर्म कभी भी उसकी प्राइस के साथ कोई छेड़ती नहीं है, उसको प्राइस उसकी प्राइस को डिस्टर्ब नहीं करती है, बल्कि प्राइस को छोड़ दिया जाता है मार्केट की जो सेलिंग है और बाइंग है इस यूनिट पे छोड़ दिया जाता है. ठीक है. अब
परफेक्ट इसको मार्केट्स को मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर अगर फर्म जो है उसके ऊपर डिपेंड करे और मार्केट की प्राइस को अफेक्ट ना करे, दिस टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. You know that if we know that demand is equal to supply, if our demand is equal to supply, our prices are stable. यानी prices change नहीं होंगी. If our demand is greater than supply, it's mean कि demand हम ज्यादा कर रहे हैं गुड की और सप्लाई कम है तो prices will go toward increase. If demand is less than supply, it means supply is greater than demand. So the prices is down, goes down. तो देखें कि अगर डिमांड सप्लाई की इक्वल है तो प्राइसेस हमारे स्टेबल हो जाएंगी. If we demand a large number of goods and services and supply of these goods and services available in a market are very few, तो क्या होगा इसका, उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी. If the supply large number of goods and services available in a market and no one purchase these goods and services, ऑटोमेटिकली जो है प्रोड्यूसर को अपनी डिमांड कम करनी पड़ेगी. तो ये देखें, ये मार्केट की डिसीजन के ऊपर जब हम डिपेंड करती है कोई भी चीज, तो उसको हम परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट कहते हैं. So the perfect competitive market is a market in which the large number of buyers and sellers, and the buyer and seller would not determine its price. They are not price maker but they are price taker. प्राइस को फ्लोटिंग में छोड़ दिया जाता है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, और ना प्रोड्यूसर प्राइस को डिस्टर्ब करना चाहता है और ना कंज्यूमर डिस्टर्ब करना चाहता है. तो द प्राइसेस आर डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. Consequently, the challenge in this circumstance is not deciding what is the price charged the consumer, but rather than what the quantity to produce at the prevailing market price. We will explore these decisions in short and long run with the assumption that firm pursue the goal of profit margin. तो यहाँ पे स्टूडेंट प्राइस की बात ही नहीं होती है क्योंकि प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल होती है ड्यू टू द मार्केट्स डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्रोड्यूसर जिस चीज के ऊपर रिलाई कर रहा होता है कि उसने मार्केट को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए, मार्केट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए large number of goods and services produce करनी होती हैं. When he produce a large number of goods and services, it means it sell a large number of goods and services in the market. और जब वो लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी को अपनी को बढ़ा देगा तो प्राइस को डाउन रख के भी वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर देता है. बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. अंडरस्टैंड? जी सर, जी जी. ओके. नाउ the next slide, the competitive firms. What are the main assumptions of competitive firms? Students, I have already discussed with you that the competitive, you know that there are some assumptions lies in the when we discuss about the some model about in our economy. तो आपको मैंने बताया था one is the social science and natural, second one is the natural science. So natural sciences में you can say that if you discuss about the experiment in natural sciences in laboratory like a physics, chemistry and math, तो वहाँ पे आपको एयर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है. बट हेयर वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक्स लॉज, एंड इकोनॉमिक्स लॉज प्योरली lies on the human behavior, and here human behavior is unpredictable, which is change moment to moment. So here we make some assumptions about this law. अगर हम ये law बनाना चाहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटेटिव का, तो उसके लिए हमें कुछ assumption चाहिए. वो जो हम assumption assume करते हैं, other things are remain constant. So first and foremost assumption is that the many firms. पहली assumption ये है स्टूडेंट्स के हमारी जो फर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, यानी many firm होने चाहिए. तो first and foremost assumption of our model. Okay. कि there are many firms in the markets. अगर फर्म्स हमारे पास मार्केट्स में ज़्यादा होंगी तो ये हमारे पास क्या होगा कि we can say that this is the perfect competitive markets.
are markets which many firms are lies. बहुत सारी फर्म को होंगी. Each producer has a homogeneous product. यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर होगा, कोई भी प्रोड्यूसर होगा, homogeneous, there are two type of good exist in a market. Ones are heterogeneous and second one is the homogeneous. A homogeneous goods and services are those goods and services which nature almost physically or naturally they are same in nature. उस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी जो होमोजीनियस हो. फर्स्ट अजम्पशन ये है कि मैनी फर्म्स होने चाहिए. सेकंड अजम्पशन ये है कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो वो होमोजीनियस हो. फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर. मार्केट प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ईच फर्म. तो हमारी जो फर्म्स है वो क्या होने चाहिए, प्राइस टेकर होने चाहिए, प्राइस मेकर ना हो. वो अपने खुद से प्राइस ना बनाए बल्कि वो प्राइस टेकर हो. दिस इज द वन एंड एसेंशियल assumption of perfect competitive markets. Now move to another assumption is that the firm demand function is horizontal line at the market price. तो फर्म का जो डिमांड फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए. उनका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द फर्म इज इनफाइनाइट. तो इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? जी सर. Now you can discuss about that the market demand and supply. Here you know that our demand curve is negative slope and supply curve is positive slope. And in which point where our supply and demand are intersect with each other, this is the adjusting price of market. तो ये जो प्राइस है हमारे पास, अगर इसको हम आगे जाके यहाँ पे सेकंड डायग्राम के साथ वो करते हैं, हम सेकंड हमारे पास सेकंड जो है डिमांड कर्व है, या सेकंड जो हमारे पास यहाँ डायग्राम यू कैन यू शो, आई शो दिस डायग्राम ऑन योर स्लाइड्स. तो आप देखें कि ये जो इसकी डिमांड कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. इट्स मीन दैट ये लार्ज नंबर ऑफ बायर भी हैं और बायर भी हैं और सेलर भी हैं. जब बायर भी बहुत सारे होंगे, सेलर भी बहुत सारे होंगे, तो इसमें इनके मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगी. ज्यादा होंगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं. ओके. नाउ द परफेक्ट कंपटीशन, द कंडीशन फॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. परफेक्ट प्रोडक्ट फर्म्स आर परफेक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट होने चाहिए. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये है कि the products are homogeneous. Firms are price taker with many firms and will survive in a market. तो फर्म हमारे क्या होनी चाहिए, प्राइस टेकर होनी चाहिए, नॉट अ प्राइस मेकर होनी चाहिए. वो अपने से प्राइस ना बनाए बल्कि प्राइस जो मार्केट्स की हैं उनको फॉलो करें. परफेक्ट एंड semantic information. What do you mean by semantic information, Fakhri Alam? You know Sorry sir. semantic information. Semantic information is the consumer is rational in behavior. Now he know about the market, everything and every price of markets. He know that what is the price of apple and what is the price of bananas and like we can say the vegetable markets as like as the other markets. So consumer is aware about the market. This is called the semantic information of the consumer. Long run. Perfect factor mobility. Perfect factor, you know, there are four factors of production: land, labor, capital, and organization. And you can say that our factor of production are mobile in long run, because in long run जो firm का honor होता है वो he can get a more and more revenue from any from the selling the goods and services. तो उसकी वजह से क्या होगा कि
जो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट्स है उसके अंदर क्या होगा कि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि हमारे पास से जो कैपिटल होगा लेबर होगा उसकी मोबिलिटी भी हो सकेगी। प्रोड्यूसर जो है मोर एंड मोर लेबर को हायर भी कर सकेगा, लेबर को फायर भी कर सकेगा, कैपिटल भी गेन कर सकेगा, बिकॉज द प्रोड्यूसर रेवेन्यू जो है वो गोज टूवर्ड द मैक्सिमम, उसका मैक्सिमम होता जाएगा। कैपिटल एंड लेबर फ्लो फ्रीली, अ फर्म कैन सेम फैक्टर प्राइस। तो कैपिटल और लेबर जो है वो इजीली फ्लो करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। तो लॉन्ग रन के अंदर ये होगा कि हमारी जो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव में जो फर्म्स है वो फर्म जो न्यू इंटर होना चाहती हैं वो भी इंटर हो जाएंगी, और जो फर्म जो है एग्जिट करना चाहती हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है वो फर्म एग्जिट भी कर सकती हैं। तो ठीक है, जी अंडरस्टैंड जी सर नाउ। जी। Free entry and exit in a firm. So this chapter we discuss about how the firm perfect competitive market choose what the demand forecast drive and market price and quantity long run versus short run and welfare property of the productive capacity. So now we move to another slide is that आपको पता है बेसिक जो मोटिव होता है किसी भी फर्म का, द बेसिक मोटिव ऑफ एनी फर्म इज प्रॉफिट। The basic motive of any firm is profit, प्रॉफिट एंड लॉस। profit maximization। बेसिक जो मोटिव होता है किसी भी फर्म का वो क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉफिट? डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट दो तरह का होता है, वन इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट। Economic profit is defined as the difference between total revenue and total cost, where this total cost includes the total fixed cost, implicit cost, opportunity cost and variable cost, explicit cost। तो ये टोटल जो कास्ट होती है, यानी जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है किसी भी कंज्यूमर का, वो प्रोड्यूसर का, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, टोटल फिक्स कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट। तो जब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कास्ट में टोटल रेवेन्यू को माइनस करेंगे, जो बाकी चीज बचेगी उसको हम कहेंगे कि इट इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ एनी प्रोड्यूसर। Second one is the accounting profit. An accounting profit is difference between total revenue and total explicit cost. Explicit cost we have already discussed in detail cost chapter, which I have already discussed with you in detail in last class. तो वो जो होगा वो आपका एक्सप्लिसिट कास्ट में से आप जब टोटल रेवेन्यू को माइनस करेंगे, दिस इज कॉल्ड द अकाउंटिंग प्रॉफिट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब ये है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट को माइनस करेंगे। Here we consider the economic profit, और यहाँ पे जो प्रॉफिट कंसिडर होगा वो कौन सा होगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? तो कॉम्पिटेटिव जी मार्केट, जी। द शॉर्ट रन, द कॉम्पिटेटिव मार्केट इन a short run is a period of time in which at least one factor of production is fixed, like a land fix or labor fix, capital fix। तो इसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन in which all the inputs are varied. This is called the long run production function. So the firm is fixed, no entry and no exit। शॉर्ट रन के अंदर फर्म फिक्स होगी। The short run quantitative decision, firm take a price as given। The firm pays a short run cost curve with the capital is fixed। The problem of competitive firm maximize its output, because you know that profit is equal to total revenue minus total cost। Here total revenue is equal to price multiplied by quantity and minus total cost means the cost of implicit cost and explicit cost। इन दोनों को ऐड करके जो हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इन अदर वर्ड, choose Q has a maximum profit as the price of output and input price। Input price
student, those prices which are used in the production process, like the price of land is equal to rent, price of labor is equal to wage rate, and price of capital is equal to interest rate. So there are two conditions for the profit maximization. One is the necessary condition and other one is the efficient condition. And necessary condition is that the marginal benefit is equal to marginal cost. वो जगह जहाँ पे हमारा marginal benefit marginal cost के equal हो उसको हम profit maximizing condition कहेंगे. यानी हमारे पास revenue में से cost minus करेंगे, so price is equal to marginal cost with price taking behavior. तो price जब marginal cost के equal होगी तो वो हमारे पास the necessary condition, and the necessary condition is equal to price is equal to marginal cost to get a optimum choice. और वो जगह जहाँ पे प्राइस और मार्जिन कास्ट आपस में इक्वल होंगी वो हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशन होगी और वहां पे हम क्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे. Here you can see that in this diagram, ये हमारे पास से टोटल रेवेन्यू कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन है. टोटल रेवेन्यू का स्ट्रेट लाइन इसलिए है कि इनिशियली वी हैव नो प्रोड्यूसिंग नथिंग, our production is zero, the total revenue is equal to zero. When we starting the production, our total revenue is increase and increase, which is positive slope, and this is called the total revenue. The total cost is zigzag condition. ये क्यों zigzag है? बेसिकली इनिशियली हमारी टोटल कास्ट आपको बढ़ी हुई नजर आ रही है, वो रेवेन्यू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कास्ट पॉजिटिव से हो रही है. इसकी रीजन ये है कि इनिशियली हमारी कास्ट इसलिए इंक्रीज है कि we have some sort of cost we have here in this starting of our industry, like a cost of fixed cost and sunk cost and fixed cost and variable cost. ये सारी कास्ट मिलके तो वो इनका इंटरसेप्ट ऊपर से स्टार्ट होता है. तो जब इनका इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होता है तो बेसिकली इनिशियली our cost is increase and increase. At point this, our cost is equal to our revenue, because this position is that we minimize our cost, like you know that our production is increase and increase, so our fixed cost is go toward the zero point, because when our revenue is increase and increase, our production is increase and our revenue is increase, it means that our cost go toward minimize because our fixed cost is coverable by its revenue. Behind about this point, you know that our cost is going toward the decrease, but our revenue is increase. The gap between these revenue and cost, this is the our maximum profit. Because हमारी जो revenue है वो more हो गया है और cost less होना शुरू हो गया. जब revenue more than cost हो जाएगा तो it means that our profit is increase and increase. So after that point, our cost is going to total cost going toward increase and revenue decrease, because wear and tear of machinery and industry, and we are a extra type of cost. We hire a more and more labor, which efficiency is going toward decrease. This type of competitive market is in short run. Understand? Now, now another slide is that we have discussed in this slide. Here is our average variable cost and here is our marginal cost. This straight line shows that price is equal to average revenue is equal to average cost. तो ये जो क्वांटिटी हम डियर स्टूडेंट प्रोड्यूस करेंगे ना, जहाँ पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को टच कर रही है, ये दिस क्वांटिटी, दिस इज आवर मैक्सिमम क्वांटिटी. बिहाइंड दैट you can see that we get an abnormal profit because our revenue is more as compared to our cost. लेकिन इस जगह पे आके हमारा रेवेन्यू और कास्ट इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे हम क्यू क्वांटिटी ये मैक्सिमाइजेशन ओवर क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे. About this point, our cost is going toward increase, but our revenue is downward. So the difference between cost and revenue is more and more. So that's why our cost is increase. और यहाँ पे आगे फर्म जो है निगोशिएट करेगी, वो टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करेगी जिसको हम कहेंगे कास्ट मिनिमाइजेशन टेक्नोलॉजी. इस टेक्निक को यूज करके वो मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकेगी. अगर वो टेक्निक कास्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक को नहीं यूज करेगी, इफ
didn't follow the cost minimization technology, then the firm goes toward the shutdown position. Understand? जी सर. So the short run supply function of competitive firms. In a short run, the supply function of competitive firms shows that quantity supply at each price when one factor of production is fixed. तो शॉर्ट रन में आपको पता है कि देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वन इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इसमें से एक प्रोडक्शन एट लीस्ट वन प्रोडक्शन फंक्शन इज फिक्स हो जाए, लाइक लैंड फिक्स हो जाए, लेबर फिक्स हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट रन कॉम्पिटेटिव फर्म। दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट रन कॉम्पिटेटिव फर्म। सो the assumption of short-run competitive firm is that the firms attempt to maximize the profit by constantly adopting the cost-saving technology. और इससे जब कॉस्ट और प्रॉफिट उसके रेवेन्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उससे आगे जो फर्म है, फर्म को ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी होगी। अगर नहीं करेगी तो फर्म सरवाइव नहीं कर सकेगी, और सरवाइव नहीं कर सकेगी तो उसके मार्केट से फायर होना पड़ेगा। Now, the short-run profit is denoted as the profit is equal to revenues minus cost. So, profit is denoted by the pi Q. Q is the quantity that is equal to price multiplied quantity is called the total revenue minus cost. There are two types of cost, variable cost and fixed cost. वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, इनमें से जब हम रेवेन्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। So there are two type of cost exist in this market. One is the variable cost and other one is the fixed cost. इसमें से जब इस रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू हमारा, इसमें से जब हम टोटल कास्ट को माइनस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट रन प्रॉफिट। So when the firm decided to shut down production, Q is equal to 0, the firm lost F। यानी जब फर्म शट डाउन पोजीशन पे होगी तो इसका मतलब ये है कि फर्म एफ को तो लॉस कर रही है फिक्स कास्ट को। फर्म अभी जो है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कास्ट और रेवेन्यू उसका बराबर होगा। इट्स मीन दैट अगर फर्म रेवेन्यू जो है वो 10 कमा रही है और उसकी कास्ट भी 10 है, और फिक्स कास्ट तो है ही है, मतलब फिक्स कास्ट 100 है, उसको तो छोड़ दें, वो तो उसके ऊपर बर्डन है। जब ये माइनस होंगे तो इसका मतलब ये है प्रॉफिट जीरो होगा, तो फर्म जो है वो शट डाउन पोजीशन में चले। अंडरस्टैंड? That is the जी. profit is equal to minus fixed cost. In the short run, the firm will only engage in production if the total revenue is equal or greater than total variable cost. In the short run, the fixed cost is a sunk cost. Therefore, the quantity produced doesn't depend upon the size of fixed cost. Now, driving the output that maximize the total short run profit. In the short run, we will assume that the capital is fixed. To maximize the short-run profit, the firm selects at a level of output where the margin revenue MR is equal to margin cost MRMC। तो फर्म जो है अपने प्रॉफिट को अगर मैक्सिमम करना चाहती है शॉर्ट रन में, तो वो पोजीशन वो गेन करेगी। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे उसका मार्जिन रेवेन्यू जो होगा वो मार्जिन कास्ट की इक्वल होगा। ये जो पॉइंट है इसका, यहाँ पे वेयर मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट और क्वांटिटी वो 7.4 प्रोड्यूस करेगी, दिस इज कॉल्ड द फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। अंडरस्टैंड? जी. So this is the condition when I show in diagram that margin revenue is equal to price is equal to margin cost. A competitive firm produce a quantity where price is equal to short run margin cost and marginal cost is pricing। तो यहाँ तक फर्म जो है वो क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकेगी, और इसके बाद अगर मार्जिन का प्राइस कर रही है, दैट्स व्हाई फर्म गोइंग टू द लास्ट पोजीशन। नाउ प्रूव द फर्म। अब देखें फर्म की जो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर रहा है वो ये है, वेयर मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड द फर्म डिमांड ऑफ। So that the firm horizontal demand function is located as a price is P1
This is the price. And the firm maximize the short-term profit by producing the Q1 units, whereas margin revenue is equal to price is equal to marginal cost. ये जो जगह है ना स्टूडेंट, ये उसकी फर्म की ये मार्जिनल कास्ट है, ये येलो जो है, और ये एवरेज कास्ट है जो ग्रीन है, उसकी एवरेज वेरिएबल कास्ट है। फर्म उस लेवल तक जहाँ पे उसका ये ए पोजीशन जो है, जहाँ पे उसकी मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन का Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये मैक्सिमम उसका प्राइस। अबव दिस पोजीशन में अगर वो येलो डॉट पे जाएगी तो इसका मतलब ये है कि फर्म की मार्जिन कास्ट जो है उसके रेवेन्यू से ज्यादा है। जब फर्म की मार्जिन कास्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो फर्म जो है वो शट डाउन पोजीशन की तरफ चली जाएगी। The total profit will fall if the firm produce a large or smaller quantity of fuel. जब टू की तरफ करेगी तो उसकी वन से भी उसकी आउटपुट जो है फॉल कर देगी। Now, the short-run supply function are competitive firms. By applying the margin revenue to price is equal to margin cost rule, we have derived a one point of the firm short-run supply function. At the price P1, the firm should supply a Q1. प्राइस P1 के ऊपर फर्म जो है सप्लाई करेगी Q1। इससे ऊपर जो होगा ना स्टूडेंट, यहाँ से ऊपर अबाउ अबाउ दिस पॉइंट जो फर्म होगी वो हमेशा सप्लाई करेगी, क्योंकि ये जो आपकी मार्जिनल कास्ट है इसके ऊपर जो ये वाला पॉइंट है, ये येलो है, इट्स मीन दैट यहाँ से आगे फर्म को जो है अपनी कास्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। कास्ट मिनिमाइजेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ेगा, जो फर्म जो है वो क्या करेगी, प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज होगा। यानी उसके आगे वो बैलेंस करने के लिए अपने आप को मार्केट के अंदर स्टेबल रखने के लिए उसको ऐसा करना पड़ेगा। The quantity the firm supply at price P can also be found by using the rule of profit maximization. Consequently, the firm's short-run marginal cost function is the firm's short-run supply function, where the total revenue is equal or greater than total cost. फर्म शॉर्ट रन फंक्शन में उसी वक्त प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी जब उसका रेवेन्यू कास्ट से ज्यादा हो या रेवेन्यू कास्ट के इक्वल हो। अबव कास्ट जो है वो दिस इज द वेरी हार्मफुल फर्म, बिकॉज फर्म जो है वो उसको क्या करना पड़ेगा, शट डाउन होना पड़ेगा या एग्जिट करना पड़ेगा मार्केट से। The firm short-run marginal cost function is the firm's short-run supply function as long as the total revenue is greater than or equal to total variable cost. Note: you need to know the position of the short-run average cost curve in order to determine whether the firm making a profit or loss in the short run. But the firm can determine its short-run profit maximizing output without knowing whether it is earning a profit or not. If the firm set output where the price is equal short-run marginal cost, it operating as well as it can at given price level. Understand, student? Now move to another. There are three conditions for the profit maximization. There are three type of condition exist in the profit maximization situation. One is the profit, second one is the normal profit, abnormal and loss. Here you can see in this diagram that the firm margin revenue is equal to price is the straight line, this is the black line. And the firm marginal cost initially going towards a decrease greater than as compared to average variable cost and then goes toward the increase. This is the one. फर्म जो है यहाँ पे फर्म जो है वो उसका जो प्रॉफिट है दिस है, you know that the profit of firm is equal to pi is equal to total revenue minus total cost। यहाँ पे देखें टोटल रेवेन्यू जो फर्म का है ये O P1 A Q1 कितना है भाई, O P1 A Q1 minus total cost of firm is OBCQ1। तो अब मुझे स्टूडेंट बताएं कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, फिर इसमें से जब किस किस को माइनस करेंगे तो क्या प्रॉफिट आएगा। हाँ हाँ
Where are you? Yes, sir. What is the profit of this condition? Where our total revenue is equal to OP1AQ1 minus total cost is equal to OBCQ1. What is the profit remaining from total if we deduct the total revenue from total cost? सर AQ1 से G1 अभी ये कट हो जाएंगे ना ये OP और ये OP1 O O P1 Q1 ये कट हो जाएंगे ना O O और Q1 कट हो जाएंगे बाकी हमारे पास बचेगा P1 बचेगा A बचेगा Q1 से कैंसिल हो जाएगा O से कैंसिल हो जाएगा B बचेगा और जी, C बचेगा देखें P1 A B एंड C तो ये हमारे पास जो होता है ये दिस इज ओवर प्रॉफिट दिस इज ओवर प्रॉफिट profit when the price is equal or greater than minimum average variable cost the firm will be maximize the profit marginal cost and marginal revenue where the market price is P1 the firm supply is Q1. So the revenue is equal to area OP1 AQ1 and total variable cost is OBCQ1. Q1 cancel, O1 cancel. So हमारे पास total revenue is equal to total cost. This is called the profit maximization condition of the firm. Understand? ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है फर्म का ये क्या है फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट है the short run supply curve of the individual firm the supply curve is related to the price and quantity supply. The supply curve coincide with the marginal cost, but only if the price exceeds the average variable cost. Price is greater than average. This is the way at least the variable cost of cover and otherwise for the firm is shut down. Condition is to stay in the business price is greater than average variable. ये कंडीशन होगी तो हमारी ये सप्लाई कर्व है कि हमारी जो है एवरेज वेरिएबल कास्ट से जब तक हमारी प्राइस ऊपर है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है अगर ये इक्वल हो जाएगा वहां पे भी मैक्सिमम उसके बाद अगर एवरेज वेरिएबल कास्ट भी हमारी प्राइस से ऊपर चली जाए तो हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा so here you can see that this is our average cost and this is our average variable cost this is average variable cost this is average cost and this is our marginal cost तो एवरेज वेरिएबल कास्ट से अबाउ जो एरिया हमारा ये जो ग्रीन लाइन आपको मोटी सी नजर आ रही है थिंक नजर आ रही है ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये सप्लाई है किसी भी फार्म की सप्लाई कर्व ऑफ एनी अंडरस्टैंड नाउ मूव अनदर स्लाइड here you can see that the shutdown position of firm before in uh, in this diagram we can discuss about the profit of firm. But here in this diagram, we can see that the shutdown price of the firm. Here is our average variable cost, which is green, our marginal cost, which is red, and our marginal cost is equal to price. This is called the total revenue. Yeah, average revenue is equal to marginal revenue. Yeah, our revenue of the any firm. This point is where our average variable cost, our marginal cost, and revenue is tangent to intersect with one another. This is called the point where the firm above this point the firm going toward the shutdown position. अब यहाँ पे देखें हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट जो है प्रॉफिट मीन ओवर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अगर हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो है OP2AQ2 OP2 OP2AQ2 टोटल कास्ट भी यहाँ पे वही है OP2AQ2 फखरे आलम प्रॉफिट कितना होगा अब
What is the profit at this position? सर ये कटिंग हो जाएगी ना? दोनों कटिंग कर लोगे तो प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा फिर? सर जीरो। जीरो आ जाएगा तो फर्म क्या हो जाएगी फिर? मतलब शट डाउन उसका शट डाउन हो जाएगा। जाएगी, बंद हो जाएगी, फर्म एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से क्या हो जाएगी? एग्जिट बंद हो करेगी। जाएगी, शट डाउन होगी। In this instant, the market price is P2 equal to the short run marginal cost and minimum average variable cost. This is called the firm shutdown position. So, दरवाजा बंद है, शुरू काका ही उठ गया। ए दरवाजा सही ही बंद है कैसे? So, so we can see that total revenue is equal to total cost, total variable cost. If the market price is less than P2, the total revenue is less than total variable cost. The firm will be supply nothing and incur the loss equal to fixed cost rather than incur the large loss. So P2 is preferred to the shutdown price. ये जो P2 है हमारे पास ये केस को प्रीफर करेगी shutdown price. ठीक है, ओके जी सर। इजी है यार, इतना टफ तो नहीं है। शहबाज शमस साहब को समझ आ रहा है ना? इट इज नॉट, जी जी सर। it is not so much difficult topics we have discussed in this lecture. These topics are related with, you have already discussed with the cost theory and profit theory, and now we discuss about the market equilibrium. Now you can see here that कि हमारे पास the firm short run supply function consists of two parts. 3/4 of the red vertical line is O to P2. ये हमारे पास सप्लाई फंक्शन है, ये रेड, and the 3 or 4 red lines short run marginal cost of the price above the P2. ये P2 से above ये जो हमारे पास ये रेड लाइन मार्जिनल कास्ट के साथ साथ आपको नजर आ रही होगी, this is the supply curve of any firm. Because above this price, the firm negotiate with their labor, with capital and so on. Why negotiate? Because the firms use the cost effective technologies, cost reducing technologies. That is why the firm जो है वो क्या करेगी, negotiate करेगी cost effective technologies को, जिसकी वजह से फर्म जो है वो शट डाउन होने से बच सकती है। अदरवाइज फर्म को जो है मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा। The competitive market in the short run, the short run market supply, aggregate supply curve, aggregating add up the supply quantity across all the firms is called the market. ये तो एक फर्म की बात हुई ना, तो ये देखें कि this is firm A supply curve. You know that supply is positive slope, here is price, here is quantity plus ये एक another firm है जिसकी सॉरी जिसकी सप्लाई कर्व जो है वो इसकी सप्लाई कर्व ऐसी है। If we add up these firm supply curve, we get a market supply curve. If we add up these two, this is the market supply. यानी ये कहते हैं कि एडिंग ऑफ द सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई Q1, Q2 एंड Q2, इनको ऐड करेंगे तो जो हमारे पास सप्लाई कर्व आ जाएगी वो हमारे पास मार्केट की सप्लाई कर्व। So here you can also see that this is the short run marginal cost of firm A and this is the marginal cost of firm B, supply of firm A, supply of B. If we add up these two supply curve, we get a market supply curve. Understand? जी 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 सर। The market equilibrium in the short run. The short run market equilibrium is definition is the firm maximize its profit, consumer maximize the utility by the budgeting
budget restriction, no excess demand or supply, demand is equal to supply. तो शॉर्ट रन में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि जो है फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी, कंज्यूमर को भी फायदा हो रहा हो और प्रोड्यूसर को भी फायदा हो रहा हो, और जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो, नो excess demand or excess supply, this is called the stable price, which is called the P2 price. ये stable price होगी. The chart run industrial equilibrium condition. No firm within the industry can change the fixed structure of production. No new firms can enter the industry. Hence, the competitive industry in the short run equilibrium is the firms in the industry have no incentive to change the quantity they produce. Understand? The short run में जो है जो प्रोड्यूसर है वो ना तो नई प्रोडक्शन कर सकता है, ना वो लेबर को नए को हायर कर सकता है, ना लैंड जो है उसको परचेज कर सकता है, because he has already fear of fixed cost, more and more fixed cost. That's why he couldn't do anything in the short term. Understand? Now, what is going on here? You can see that this is the marginal cost and this is average variable cost and industry. This is over the revenue of firm, where the marginal cost equal to marginal revenue. This is called the profit maximization. And the firm A is produce the output at Q1. Firm B is produce the output of Q2. Because here you can see this is the profit. ये पहले फर्म को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है. क्यों ज्यादा प्रॉफिट? इसलिए हो रहा है कि कॉस्ट बहुत कम है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बहुत कम है, लेकिन उसका रेवेन्यू ज्यादा है. सेकंड में देखें प्रॉफिट थोड़ा श्रिंक हो रहा है क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट जो है रेवेन्यू के करीब आ गई है और ये रेवेन्यू है हमारा, तो गैप इज लेस एज कम्पेयर टू दिस गैप. जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड कंडीशन में वो फर्म है जहाँ पे इसकी एवरेज जो वेरिएबल और एवरेज टोटल कॉस्ट है वो अबव वो इसके ऊपर लाइज कर रही है, और यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू को ऐड कर आपस में एडजस्ट कर रहा है. यहाँ पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे उससे अब नॉर्मल प्रॉफिट और यहाँ पे नो प्रॉफिट. जब इन तीनों चीजों को मिलाएंगे तो दिस इज द सप्लाई ऑफ द एनी फर्म एंड दिस इज डिमांड ऑफ एनी फर्म. तो ये हमारे पास मार्केट की सप्लाई और डिमांड है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? जी So सर. competitive market in the short run, market equilibrium in the short run. In the short run, the firm can make loss. लॉस क्यों करेगी शॉर्ट रन में? क्योंकि फर्म ने फिक्स एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट को बियर किया है. द आइडिया इज दैट द प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट इन अ लॉस इज दैट स्मॉलर देन नॉट प्रोड्यूसिंग एट ऑल. ये शॉर्ट रन में लॉस कर रही है. ये देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अबव है इट एवरेज मार्जिन रेवेन्यू से. ये जो कंडीशन है ये उसका लॉस है फर्म का, क्योंकि कॉस्ट अबव है और रेवेन्यू कम है, तो कॉस्ट में से रेवेन्यू को माइनस करेंगे. दिस इज द लॉस ऑफ एनी फर्म. Understand, students? Now, we took a short break, 5 and 10 minutes. Then I will come back and we will start. ओके सर. ओके. नो प्रॉब्लम. Okay, sir. Okay. Welfare application. So there are two type of the welfare in this diagram. We can see that one is the consumer surplus and second one is the producer surplus. Consumer surplus means actual to pay and willingness to pay. एक्चुअल अमाउंट ऑफ पे एंड विलिंग. एक बंदा जाता है ना मार्केट के अंदर और वो जो है घर से इतने मनी लेके जाता है कि मुझे ये चीज इतने की मिलेगी, ले से कि वो 100 रुपीज, और वो मनी वहां पे जाके उसको वही चीज जो है 90 रुपीज की मिल जाती है, तो 10 रुपीज का उसको बेनिफिट हो जाता है. इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस. और कंज्यूमर सरप्लस जो है सी एस एक्सप्रेस बाय हाउ मच the consumer value assessed to market area under the demand curve and above the price level. तो area under the demand curve और above the price level, this is called the consumer surplus. इसको हम consumer surplus. The producer surplus PS is the measure of the producer welfare.
The producer surplus is expressed by how much the producer is value assessed to the market, profit or loss, minus plus fixed cost of the individual firm. The area between marginal cost and price level of the firm is called. Any area above the supply curve is called the producer surplus, and area below the demand curve is called the consumer surplus. ये देखें ना student, this is our demand and this is our supply curve. This is our demand curve. So here is the quantity and here is the price. So this is our price level P1. So this area above the price, and this area is called above the price is called consumer surplus, CS. And this is the supply curve and this is the price level, and area below the price and above the supply curve is called PS. PS mean the producer surplus and CS mean the consumer surplus. Area above the supply curve is called the producer and below the price line is called the producer surplus, and area below the demand curve and above the price line is called the consumer. Understand? Yes, sir. Now you know that here you can see that this is our marginal cost and average cost, and this is over the marginal. This area above, this is our total average revenue and this is our cost. This area which is above the cost and below the revenue is called the producer surplus. Now we can see that here is the marginal cost and the straight line is called the margin revenue is equal to price margin revenue. So here is the marginal cost is equal to margin revenue. We produce a quantity Q1. So this gap between the cost and revenue is called the producer surplus. It means PS. Producer. Now the producer surplus is area above the supply curve. This is basically cost curve, marginal cost, and this is also called the supply curve. Area above the supply curve and below this demand, below this price line. प्राइस लाइन के बिलो और सप्लाई कर्व से अबव ये जो एरिया होगा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर. अंडरस्टैंड? Yes. So the welfare mean the total surplus is equal to the measure the social welfare. The welfare of the society is also known as the social surplus, expressed by how much all the agent in the society, all the consumer, producer, and the government value the assets of market. Measure the total surplus by area between the marginal cost curve and demand curve. तो ये ओवरऑल जो वेलफेयर होगी, वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट इज कॉल्ड द ओवरऑल सोशल वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी. दिस इज कॉल्ड द इंडिविजुअल वेलफेयर. Individual welfare, and this welfare is called the social welfare, in which involve the all stakeholders like consumer, producer, and government. So the competitive market in the short run content, important property of the competitive market is the allocative efficiency. How we allocate the maximum utilization of it. No scope for further beneficial trade between the consumer and producer. Total welfare and social surplus is maximized. One way to see that price is equal to marginal cost, that is the willingness to pay is exactly equal to extra cost produced. Another way to see that no better Q than Q star. So this is our, we can say that the competitive market in the short run. Understand? Yes, sir. Now move to another slide. Here you can see that this is the aggregate consumer surplus area below the demand curve and above the price line. And here is the producer surplus area above the supply curve and below the price line. ये दरम्यान में एक प्राइस लाइन है, इससे ऊपर जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस एंड बिलो जाएंगे तो producer surplus. Because producer supply the goods and services and above this supply curve, this is the cost of producer.
and this is the price, market price of any commodity. Above the supply curve and below the price line, this is called the producer surplus. Below the demand curve and above the price line, this is called the consumer surplus. Understand? Okay. Okay. The competitive market in the long run. The long run market equilibrium is defined as the firm choose the output optimally. The consumer maximize the utility given the budget constraint. The firm choose the input optimally. There are no incentive to entry and exit in the market. No extra normal profit or loss. No excess demand and supply. तो लॉन्ग रन की बात आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन वेरिएबल इज फिक्स्ड बट हियर ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल फर्म utilize the optimal inputs and no there is no incentive to entry and exit. इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप इंटर हो या एग्जिट हो. नई फर्म इंटर होगी तो उसको दूसरी फर्म तक पहुंचने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, वो भी नहीं हो सकती और एग्जिट भी करना जो है आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. So you can say that this is the long run supply, long run competitive market thing, long run. Now move another slide. When we refer to the industry being a state of equilibrium, we are referring to the industry where the market price and the quantity produced is stable given the market demand and supply. No firm over the industry is desired to enter in the industry and no firm within the industry leave. तो लॉन्ग रन में ना विद इन द इंडस्ट्री कोई लीव करेगी और ना नई इंडस्ट्री इंटर होगी, इसलिए नई इंडस्ट्री इंटर नहीं हो सकती है. इफ न्यू इंडस्ट्री इंटर इन द मार्केट it cannot compete with the other firms because these already the firms who are working already in the markets, they can get a more and more profit and they are stable. But if we enter the new firm in this industry, in this market, they it can't be survive in a market because market is saturated and uh, the old firms are going toward their peak level. Understand? Yes, sir. Okay. The long run condition in the markets is that all the factor of production are variable. तमाम factor of production variable होंगे. Firm can enter and exit from the market. फायदा उसको कोई नहीं होना लेकिन इंटर एग्जिट हो सकती है. Hence the competitive industry in the long run is equilibrium. Each firm has no incentive to change its method of production or amount of output. The profit are zero. The firm has no incentive to enter and exit. ये कंडीशन है लॉन्ग रन के लिए. जिस तरह हमने शॉर्ट रन की कंडीशन पढ़ी थी, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग रन कंडीशन इन द फर्म. ओके. नाउ move to another one. Here you can see that the competitive market in the long run. From short run to long run competitive equilibrium market, where you can see this is our demand curve and this is our supply curve. In long run market, you can see that the over total revenue is equal to average and margin revenue. This over average cost, average variable and average and marginal cost is this. Where the total revenue and long run marginal cost curve intersect with one another, this is the equilibrium. 200 is the equilibrium condition. Can generate a profit of 600 in this condition. Understand student? The competitive markets in the long run. तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक मार्केट है और ये हमारी एक फर्म है. तो अब लॉन्ग रन में मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉन्ग रन में फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. तो अब देखें इनिशियली फर्म की जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है ये है.
अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स है, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? जी सर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो लॉन्ग रन है, तो यहाँ पे एक फर्म जो है वो कास्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है। तो कास्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज का मतलब है, इनिशियली दिस इज द फर्म इनिशियल एवरेज वेरिएबल कास्ट शॉर्ट रन, एंड दिस इज द एवरेज वेरिएबल कास्ट इन शॉर्ट रन टू। तो वो देखें कास्ट को मिनिमाइज कर रही है, जिसकी वजह से फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है, अपनी कास्ट को डाउन कर रही है। दिस इज द कॉम्पिटेटिव फर्म इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में फर्म और किसी भी चीज से फायदा, आपको पता है प्राइस को तो फर्म छेड़ ही नहीं सकती है। फर्म ने ओनली क्या करना है, कास्ट मिनिमाइज करके वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर। अंडरस्टैंड? Here you can see that firm short run marginal cost and firm short run जो average cost है वो आपके पास ये given है। तो this is the price and this is the average price is equal to average revenue is equal to marginal cost। तो ये जगह है। तो यहाँ पे देखें फर्म की जो मार्जिनल कास्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट, वो सारी एक ही जगह पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही है, क्या स्टैटिक वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है। दिस इज द मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर ओवर डिमांड एंड ओवर शॉर्ट रन मार्जिन का। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये फर्म की, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे फर्म जो है ये फर्म का शट डाउन पॉइंट है, शट डाउन प्राइस है। इससे अबव अगर फर्म जाएगी तो फर्म को लॉस हो। अंडरस्टैंड? When would motivated to farm to be the industry where the profit is zero? To create the more realistic model, let's assume that the demand change and map over the process is moving from one state of long run equilibrium to another. So the situation demand for the product is increased. तो ये फर्म के लिए लास्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट्स के, यहाँ से अगर प्राइस बिलो हो जाएगी तो हमारी कास्ट बढ़ जाएगी, जब कास्ट बढ़ेगी तो फर्म जो है वो शट डाउन की तरफ चल जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हाउ to exciting the firm, the industry respond to shift in the demand curve. Assume that before the market demand curve increase there, no firm and not firm. Each firm operates the plant with short run average cost and margin cost shown in the previous diagram. Each plant produce the Q0 unit at minimum long run average cost AC. The each firm maximize the short run profit by producing the Q0 unit where the price is P0 and Q1 unit where is the price P1. So you can here see that the firm short run marginal cost in the firm short run supply curve function for the price is above the minimum average variable cost. तो ये हमारे पास फर्म की जो प्राइस है वो P0 है। So here is the firm average variable cost in long run, average variable cost in short run. If the firm average variable cost in short run is below the margin revenue is equal to price, तो ये हमारे पास ये जो कंडीशन होगी जहाँ पे फर्म जो है मैक्सिमम आउटपुट करेगा, इससे अबव अगर आउटपुट प्रोड्यूस करेगी फर्म, यहाँ तक वो कर सकती है बी पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन प्राइस में इंक्रीज आ गया है ना, डिमांड बढ़ी है। तो आपको पता है व्हेन डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इट प्राइस विल बी गोज अप। तो प्राइस अप हुई है तो टोटल रेवेन्यू किसका बढ़ा है, प्रोड्यूसर का। अगर इससे अबव फर्म प्रोड्यूस करना चाहेगी तो इसकी मार्जिन कास्ट अबव हो जाएगी एज कम्पेयर टू मार्जिन रेवेन्यू, तो ये फर्म के लिए जो है शट डाउन पॉइंट होगा और ये फर्म की सप्लाई कर्व होगी, क्योंकि यहाँ से आगे जो है फर्म जो है कास्ट इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगी, जिसकी वजह से उसकी कास्ट मिनिमाइज होगी और फर्म जो है गेट अ मोर एंड मोर प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? So the industrial supply curve here is the supply of the any firm. This is at price P naught. The supply of the firm is straight line. But when the price is goes up, the supply curve is goes up. But if demand is equal to D1 and demand is equal to D1 prime,
The demand is increased, the supply curve is goes positive direction. At initially the supply curve is straight line. इसकी क्या रीजन हो सकती है? आप दोनों में से कोई बताए कि पहले हमारी सप्लाई कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन जो हमारी डिमांड कर्व बढ़ी तो सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप होगी। इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दिस? फखरे आलम शम्स, टेल मी अबाउट द लॉजिक ऑफ दिस। पहले सप्लाई कर्व थी स्ट्रेट लाइन, अब सप्लाई कर्व हो गई है पॉजिटिव स्लोप। किसका माइक ऑन म्यूट है? फखरे आलम। ओके, ये ले, आई म्यूट योर माइक नाउ, यू आर अलाउड टू टॉक विद मी। यस सर। क्या बताओ यहाँ पे, पहले इनिशियली हमारी जो सप्लाई कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, बट हॉरिजॉन्टल है, बट when our demand of product is increased, the supply curve is goes toward the positive slope. What is the logic behind of this? सर ये शॉर्ट रन है ना, जी, ये शॉर्ट रन है ना सर, शॉर्ट रन सप्लाई। ये इसलिए है कि इनिशियली हमारी सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन थी, हम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे थे और हमारी डिमांड भी सीधे कम थी। अब डिमांड जब बढ़ गई D1 से D2, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो चीजें हमने मार्केट में प्रोड्यूस की हुई थी वो कम होना शुरू हो गई और हमारी सप्लाई कर्व पॉजिटिव हो गई है। तो डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ रही है, तो सप्लाई हमारी कम हो रही है, चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दैट्स व्हाई दिस सप्लाई इज गोज टुवर्ड द पॉजिटिव स्लोप। ओके, जी now the short run supply industry supply function shows the quantity or existing firm in the industry supply at each price. The total quantity supplied in the short run where price is P naught is equal to Q naught and Q naught N naught. The long run supply curve of the function intersects the short run supply curve function at Q and Q naught. लॉन्ग रन में ये हमारे पास सप्लाई कर्व हो गई है और शॉर्ट रन में ये सीधे लाइन थी। ओके, जी सर। note the short run industry supply function has a horizontal segment because this is because the firm is not supply any output below the minimum average variable cost and will leave the industry, leaving the remaining firm to produce at minimum average variable. The short run supply function is less elastic, steeper than long run supply function. This implies that change in the demand will be cause the price to change more in the short run than long run. Understand? ये इसका नोट भी लिखा हुआ है साथ। जी जी So the above figure shows that the original demand function is D naught. When the demand is increased, the new market demand is D1. The new short run equilibrium is point B, where price rises from P1, and point B is a new short run equilibrium because the market clear with just existing funds. How does the increase in demand affect the competitive firm? At the point higher than price P1, the each firm maximize its profit by producing Q1. So this is the analysis of this topic I have asked. The firm shows short run average cost increase from OP naught to OC when the firm increase the output from Q naught to Q1. Each firm earns the profit is CP1 DPD. So at unexpected increase in the market demand, increase the price, the firm output and industry output is increase, the each firm is earn a profit from this. ये हमारे पास देखें, this is over a diagram, you can see here that firm initially short run में प्रोड्यूस कर रही थी at point A पे, और जब डिमांड बढ़ गई और प्राइस उस वक्त P1 थी, P नॉट थी, जब डिमांड बढ़ गई P1 तक, P नॉट टू P1, इट्स मीन दैट जब आपको पता है डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाता है। सो
the new revenue of producer is equal to margin P1. Margin revenue is equal to P1 at point B. So this point, the producer revenue is equal to OP1 BQ1. तो रेवेन्यू जो प्रोड्यूसर का न्यू हो जाएगा OP1 BQ1 और कास्ट उसकी हो जाएगी OP0 DQ0. इसको डिफरेंस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट रन प्रॉफिट ऑफ एनी फर्म. ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा. अंडरस्टैंड? जी. How does the industry respond to shift in the demand when firm are free enter in the market? Assume before the market demand increase, there are n not firm. The increase in the market demand, which caused an increase in the market price, has made the industry profitable and attractive. New firms enter in the market in order to sell at this attractive price. The amount of time a firm continue to make a profit depend how long it take a firm to enter in the market. वही चीज बताया है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी. प्राइस गिरेगी तो टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूसर का बढ़ जाएगा. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. रेवेन्यू बढ़ेगा तो नई जो फर्म है उनके लिए भी अट्रैक्शन होगी और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी जिसकी वजह से क्या होगा? It make a firm to enter in the industry. Understand? जी. Once the new firm enter in the industry, the price decline. This is because of the short-run industry supply shift from right as the more firm enter in the market, the rightward shift in the short-run supply function cause the price fall. जब नई फर्में मार्केट में इंटर हो जाएंगी ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी. इनिशियली सप्लाई S1 थी, S2 फिर S3. तो सप्लाई शिफ्ट होगी तो प्राइस दोबारा एडजस्ट होकर वापस P0 पे आ जाएगी. क्योंकि आपको पता है सप्लाई जब ज्यादा होती है तो प्राइस कम होती है और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस ज्यादा होती है. देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस. ठीक है जी. जी. So as more the firm enter in the market price will be fall P2 and the quantity produced in the firm is Q2. So although the total industrial quantity supply is increased because the additional output supplied by the new firm, the amount of output is produced by the existing firm. The entry of firm caused the short-run supply to shift the rightward, pursue the market price and firm profit down to the original level. Understand? So the eventually there is more firm in the industry. Each firm produce the initial level of output. As increase in the market demand cause the equilibrium industrial output to increase, but does not change the long run price in the constant industry. So, so here you can see that if our price is initially this P1, तो जब आपको पता है सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस जो है P1 से P2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. और हम an increase in the demand is responsive profit earned by the existing firm in the profit earned from the higher price ultimately responds for lowering the price, make back the original level and increase the supply of product now greater the demand. So देखें जब प्राइस बिलो हो जाएगी, पहले प्राइस हाई हो गई थी P1 है, प्राइस P2 हो गई तो इसका मतलब है प्राइस कम हो गई तो हमारा रेवेन्यू भी कम होना शुरू हो गया. फर्म का अब रेवेन्यू यहाँ तक ही होगा ये वाला. क्योंकि फर्म जो है देखिए पहले Q1 तक वो प्रोड्यूस कर रही थी इस लेवल पे, अब वो दोबारा अगेन जो है Q2 तक प्रोड्यूस करेगी क्योंकि प्राइस लो हो गई है, उसको प्रॉफिट कम हो रहा है जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देगी. अंडरस्टैंड? The profit जी motivated जी firms to enter the industry and cause the price to fall back to the original long run level where price is equal to margin cost is equal to long run cost curve, average curve. So the price determination and increase the cost of industry. Consider the industry that produce the goods that contain the specialized factor. So assumption, firms do not have the same long run average cost function.
There is a factor of production that is not in perfect elastic supply. To increase the output, the product price must be increased in order to pay for increase the cost of factor. The position of firm long-run cost function will shift as the industry output change. The quantity supply will be increased in the long run only if the industry receive a higher price. The long run industry supply function is positive. तो ये कह रहा है कि जो लॉन्ग रन में फर्म है वो कैनॉट बी वो उसी लेवल तक प्रोड्यूस करेगी जहां तक उसने प्रोड्यूस करना है अदरवाइज इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो फर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा जब फर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से उसको बेनिफिट होगा rise the factor price when the industrial output expand the external this economy of scale is increase in the industrial output cause the factor price to increase. अगर आउटपुट प्राइस बढ़ेंगी ना तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होंगे फर्म को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा यानी मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़े जिस तरह हम कहते हैं महंगाई हो गई ना इन्फ्लेशन बढ़ी वो प्राइस बढ़े तो फर्म को फायदा होगा लेकिन अगर इनपुट प्राइस बढ़े तो फर्म को लॉस होगा इनपुट प्राइस मीन द प्राइस ऑफ लेबर कास्ट you can see that the cost of capital interest rates ये बढ़े तो नुकसान होगा otherwise फायदा होगा in the increasing cost industry the price of the factor of production increase and industry output is increased the industrial long run supply curve function is slope upward this is referred to the external this economy of scale here you can see that in this diagram at price P1 the marginal cost and average cost ये इसका point है तो P2 में ये point है So this is the supply curve of from S1, S2 and S3. तो जून देखेंगे ये प्राइस P1 होगी तो इसकी सप्लाई कर्व यहाँ तक इससे अबव होगी लेकिन अगर प्राइस P ये वाली हो जाए या ये वाली हो जाए तो उसकी वजह से फर्म की जो सप्लाई कर्व है वो ये डिफरेंट सप्लाई कर्व होंगी और ये यहाँ तक इस प्राइस पे फर्म को रेवेन्यू इतना होगा इस प्राइस पे फर्म को रेवेन्यू इतना होगा उससे अबव सप्लाई कर्व होगी P2 प्राइस में फर्म को ये वाला ये सारा रेवेन्यू होगा और उससे अबव जो है इसकी सप्लाई कर्व होगी अंडरस्टैंड जी सर फखरी आलम जी सर now when the industrial output is Q naught the firm long run average cost function is ACL naught when the industrial output increase Q1 the firm long run average cost is ACL तो यहाँ पे देखें कि जब आउटपुट Q naught होगी तो एवरेज कॉस्ट ये होगी ACL और अगर आउटपुट Q1 होगी तो एवरेज कॉस्ट ये हो जाएगी फर्म की और यहाँ तक फर्म प्रोड्यूस करेगी एनालिसिस डिमांड इंक्रीज यानी इसका एनालिसिस क्या है व्हेन डिमांड इनिशियली द इंडस्ट्री प्रोड्यूस क्यू नॉट व्हेन प्राइस इज पी नॉट इनिशियली जो है इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू नॉट जब प्राइस पी नॉट है इन फर्म इन इंडस्ट्री प्रोड्यूस क्यू नॉट आफ्टर डिमांड इंक्रीज जब लोगों ने डिमांड बढ़ा दी ना उस गुड्स उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की द फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड this is because an increase in industrial output increase the price of factor of production while every firm long run average and marginal cost is shift outward. For each firm, the quantity where long run average cost reach the minimum is at Q1 is due to increase the factor cost. वो कह रहे हैं कि जब डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है कि इंडस्ट्री मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी तो इंडस्ट्री की इनपुट कास्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो मोर लेबर हायर करेगी मोर लैंड हायर करेंगी तो जिसकी वजह से ज्यादा हायर करेंगी तो उनकी कास्ट बढ़ेगी अगर मोर कैपिटल लेंगी तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कैपिटल का जिसकी वजह से कास्ट जो है कास्ट भी सारी ऊपर की तरफ अबाउट शिफ्ट हो जाएगी दिस इज द न्यू क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट कुड have stayed the same or decreased. In this example, it increased. When the price of factor increase, the industry expand output where the external this economy of scale. In the second diagram, we can illustrate what happened in the industry's demand rise. Initially, the market curve is D naught demand and market price is P naught. The quantity supply is Q naught. Each firm produce Q naught, G naught, and there is N naught industry in the market, firm in the market. ये इसकी एक्सप्लेनेशन है ओके जी after market
demand increase D1, the price increase to new short-run equilibrium P2 and the existing firm earn a profit. This motivates a new firm to enter in the market and short-run supply curve function shift to rightward because S naught. The price will be fall P2 to P1. The new short-run supply intersect the long-run supply function at point B, the market equilibrium B. The industrial output is increased from Q1. ये देखें ना ये देखें पहले ये था प्राइस P1 थी तो हमारी आउटपुट ये थी डी पे। अब क्या हुआ कि जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ी गुड्स की, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उन्होंने दे इंटर इनटू द मार्केट। तो जब मार्केट में इंटर हुए तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये सप्लाई जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बढ़ के S2 से S1 होगी। सप्लाई 1 होगी तो हम बी पोजीशन पे आ गए जहाँ पे प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज की बी पे थी। अब जो न्यू मार्केट इंटर न्यू इंडस्ट्रीज इंटर हुई फार्म इंटर हुई मार्केट में, तो सप्लाई जो है मजीद कम बढ़ी तो जिसकी वजह से डिमांड को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वहाँ पे प्राइस P1 थी। एट जब प्राइस P1 थी, यही ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है इन दिस scenario के you can see here that some increase their output to Q1 when the external preliminary economics and increase in the market demand increase the long run equilibrium price and output. Some industry is earn zero profit और जो आउटपुट आगे बढ़ना शुरू हुई, ये देखें आउटपुट तो इस पोजीशन पे आके फार्म ने उसका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो गए और उसने जीरो प्रॉफिट कमाया। जीरो प्रॉफिट मीन कि इससे आगे उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पे कास्ट और रेवेन्यू आपस में इक्वल हो जाए तो वो प्रॉफिट क्या होता है भाई? फखरे आलम, when cost and revenue are equal to each other, the profit is equal to what is the profit? Shams, Shabazz. When the profit is equal, revenue is equal to cost, what is the profit of any firm? Fakhri Alam. Yes, sir. When revenue is equal to cost, what is the profit of the firm at this condition? Zero. How much profit firm earn in this condition? Yes, sir. फिल्म का जो प्रॉफिट होगा अर्न होगा वो जीरो होगा। So note, the firm industry has earned a zero profit. External preliminary diseconomies are more likely to economies that require the use of specialized sector of production, land and skilled labor. तो इस डिसइकोनॉमी से बचने के लिए फिर फर्म को क्या करना पड़ेगा? स्पेशलाइज्ड फैक्टर को यूज करना पड़ेगा, लाइक लैंड को यूज करना पड़ेगा और स्किल लेबर को यूज करना पड़ेगा, इफेक्टिव लेबर को यूज करना पड़ेगा जो उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। अंडरस्टैंड? जी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई implies inelastic. A large change in the price caused a small change in quantity is called the inelastic supply. अगर प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो और क्वांटिटी में बहुत कम चेंज आए तो इसको कौन सी सप्लाई कर कहते हैं? Implies inelastic. Inelastic. Elastic is a small change in price called small change in quantity is called the elastic. And unitary elastic mean if one unit change in price called the one unit change in quantity of supply is called the unitary elastic. This lecture is already I have given to you, Fakhri Alam, Yes, sir. and the slides of this lecture is also in your available in your WhatsApp group. Yeah, okay, sir. So you will share this slide to Shams Shabazz. Okay, sir. Okay. Okay, thank you. This lecture is we have already done in I think before last two classes.
Fakhri Alam, Yes, sir. we have discussed this lecture on supply, I think, in third lecture. Third, yes, sir. Okay. Move to another one. So here is the elasticity of supply as the measure the response of quantity of supply with variation in price. So elasticity of supply is equal to delta Q S change in supply delta P price of supply multiplied by P over S. This is called the elasticity of supply. Okay. Elasticity of supply is measure the responsive of quantity with respect to variation in price. प्राइस में चेंज होने से जो क्वांटिटी में चेंज होता है दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अंडरस्टैंड Yes, sir. suppose जी that सर industry supply curve is this P is equal to 30 plus 2Q, Q is equal to 15 when the price of elasticity is Q is 20. If you know that quantity is equal to 20, the price is equal to 30 minus 2Q. इसमें जब क्वांटिटी को पुट करेंगे तो प्राइस हमारे पास 10 आएगी तो रीअरेंज द डिमांड फंक्शन P is equal to minus 30 plus 2Q. जब ये हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25. Here the price of any commodity, वो प्राइस क्वांटिटी भी इनिशियल क्वांटिटी 20 है ओके प्राइस 10 है जब इस 10 और 20 को इसमें पुट करेंगे चेंज इन प्राइस क्वांटिटी में तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाए We have already discussed this topic in last before last two lectures. फखरे आलम यही बात है ना जी जी तो वो वहां पे ये सारा कुछ गिवन है So thank you so much for listening my video. I hope this video is very beneficial. Listening my lecture, this is very beneficial for you. If you have any question about this lecture, kindly discuss with me. नो सर बताइए Easy है जी जी सर थोड़ा लेंथ हो जाता है जी ना तो कर सर लेंगे कवर तो क्या होता है फखरे आलम मतलब थोड़ा कोर्स लेंथ हो जाता है ना तो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह Okay, okay. Shams Shabazz, you have any confusion about this lecture? नहीं सर बस थोड़ा लेंथी है हो जाएगा कवर So this is our second last lecture, and we have we will took a class inshallah in next Saturday, and this यस is सर our last class of this schedule, and I hope ये फखर आलम आपको शम्स शबाद आपने तो थोड़ी कम क्लासेस ली हैं फखर आलम आई होप आपको इस कोर्स में सेटिस्फेक्शन मिली होगी जी जी काफी आर यू रिलेटेड हमारा एक और सब्जेक्ट है बिजनेस का जी 5402 तो उसके रिलेटेड ही है कुछ टॉपिक्स है ना इसके और उसके सेम ही है तो तो वो आई होप बड़ा कि आपको बेनिफिशियल अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इकोनॉमिक्स की कि नहीं हुई है जी जी वही है सर कोई मसला प्रॉब्लम नहीं सर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा मैं व्हाट्सएप पे आपसे पूछ लूंगा समझ आया है सही एग्जैक्टली जी जी आ गए शम्स साहब को शम्स साहब को 2 लेक्चर कैंसिल लगे हैं शम्स शम्स वेयर आर यू जी सर मैं जरा बिजी हो गया ऑफिस में एक आदमी आ गया उसकी बात सुन रहा था अच्छा अच्छा चलो ठीक है ओके आप सुने तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने इसको लॉग आउट कर देना है 5 o'clock ठीक ओके होगा सर सर टुडे इज ओवर एनफ लेक्चर आई थिंक बहुत है ना यस यस सर काफी हो गए काफी है ना अभी एक चैप्टर रह गया ना हाँ बस एक चैप्टर रह गया है वो कौन सा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और ये वो ओके जी जी सर चलो ठीक है फिर ओके ठीक है सर ओके अल्लाह हाफिज़